गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था on before video. They have seen here, we have seen that a story is given here about a paheli and a bujo, where they found that living organisms, there are many living organisms they found in their trip where they go on to Rajasthan. They went to Rishikesh and many places that they found many organisms there, and in these organisms and the surrounding where they lived, in that they have seen that in desert, they have seen in the desert, which creature and which animal was that. So they saw the camel, and in mountain areas there were goats and yak. In Puri, near the sea, they have found the crabs, and by the fisherman who was catching the crabs, and they thought that now a place which there where there is no living organisms, they have started to search that place where there is no organisms. Now they have given here the activity number 1, which I have said before, that what you have to list out the things like animals, plants and other objects which you have found in different surrounding areas where you went, and in forest which are the animals or plants which grow, what you have seen, the things that you have to write in these columns. Now they have given here the habitats and adaptations, where we have seen that the in the sea plants and animals which are saline waters, which are surrounded by saline waters, they dissolve air, द डिज़ोल्व एयर इन वाटर, और वाटर में क्या होता है, एयर डिज़ोल्व होता है। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने इसमें एग्जांपल दिया था कि ऊँट है, तो ऊँट पानी पानी के बिना टू मैनी डेज के लिए रह सकता है, जीवित रह सकता है। वैसे ही गिल्स, जो गिल्स है उसके फिशिस है, उसके ऊपर गिल्स होते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन लेते होंगे, तो जो वाटर पानी में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है वो गिल्स के कारण फिशेस ले सकती है ऑक्सीजन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर where the gills the fishes has gills, that gills present in the fish helps them to use oxygen dissolved in the water. Now we see that the features of a fish helps to live inside water, and the features of the camel helps it to survive in the desert. जो भी पानी के बिना फिशेस क्या करती है, तो इनसाइड वाटर दे हैव मैनी फीचर्स टू लिव, दे टेक ऑक्सीजन बाय गिल्स विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। वैसे ही ऊँट होते हैं जो रण में होते हैं ऊँट, वो ऊँट कैसे होते हैं, तो दे ऑल्सो कैन सर्वाइव फ्रॉम फॉर मैनी डेज बिकॉज दे live without water for many days, because they have their body, because their body do not have so much sweat, and so the water they lose their urine in little amount, and their dung is too dry, so they can live without water for many days. Now here we have to read it. We have taken only two examples, like where we have taken the two animals, for example fish and camel. We have taken the two examples. There are many wide varieties of animals and plants that live on the earth. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that helps them living in the surrounding in which they are normally found. There are many certain features by which they can live in the surrounding. The presence of specific features or a certain habits which enables an organisms to live naturally in the place is called adaptation. You have to underline this. What is adaptation? The presence of specific features or certain habits
which enables an organisms to live naturally in a place is called adaptation. उसको आप क्या कहेंगे? Adaptation. So now adaptation of organism differs depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in a sea. पानी में कैमल नहीं रह सकता क्योंकि दे आर प्लेस वेर दे लिव वेर देयर एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिफर. फिश तो पानी में ही रहती है, कैमल्स तो वो सैंड में ही रहते हैं, रेत में ही रहते हैं, रंड में ही रहते हैं क्योंकि वो पानी में ऑक्सीजन ले नहीं सकते, इसीलिए वो सी में नहीं रह सकते. वैसे ही फिश है तो फिश बाहर आप निकालोगे तो वो मर जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन ले पाएगी नहीं. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. हैबिटेट का मीनिंग क्या है? तो वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs of the organism. Organism के जो भी चीज़ उनको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे उनको मिल जाता है. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. Many types of plant and animals they live in a same habitat. वो एक ही प्लेस पे रहते हैं. The plants and animals that live on a land are said to be terrestrial animal habitats. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो भी जमीन पे रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. Some examples of terrestrial habitats are forest, grasslands, deserts, coastals and mountains region. On the other hand, the habit of the plants arid animals that live in water are called aquatic habitats. जो भी पानी में रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? Aquatic habitats. Lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitat. आपको अगर एग्जाम में पूछे कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स लेक, रिवर एंड ओशंस आर द सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. वैसे ही आपको टेरेस्ट्रियल के पूछे हो तो आपको लैंड लिखना है, फिर लैंडस्केप लिखना है, फॉरेस्ट लिखना है, डेजर्ट लिख सकते हो आप. यहाँ पे आपको दिया गया है अंडरलाइन दैट लाइन. Some example of terrestrial are forest, grassland, desert, coastal and mountain region. That are the examples of terrestrial habitat. वैसे ही aquatic का भी हो गया. तो there are large variations among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. यहाँ पे क्या कहा गया है कि there are many variation different types of variations are there where the forest and these regions located in the different parts of the world के different parts में वो होते हैं. वैसे ही यहाँ पे the organisms both plants and animals living in a habitat are its biotic components. उसको हम क्या कहेंगे? Biotic components. The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constituent its abiotic components. अब आपको पूछे एग्जाम में कि biotic components, what is meaning of biotic components? So you can write that the organisms which are living are both plants and animals in a habitat are its biotic components. The organism, both plants and animals living in a habitat is known as a biotic component. And what is abiotic? So the non-living things such as rocks, soil, air and water is the habitat constitute its abiotic components.
आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स? तो सनलाइट और हीट कैसा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं? कौन से आते हैं? तो वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. Let us look at some abiotic factors and their effects on seeds as they grow into young plants. अब जब सीड्स आप डालोगे तो वो सनलाइट के बिना वो उग नहीं पाएगी, वो इट कैनॉट ग्रो. सो द सन इज द मेन source of the source of the component of the seed, so by which a plant can grow. Here they have given the activity number 2. Recall activity number 5. In chapter 1 we made sprouts from moong and chana seeds. We have grown. I have also shown you the moong and chana seed. When the seed turns into a sprout, it is said to be germinated. उसको हम क्या कहेंगे? Germinated. This is the beginning of the life of a new plant. वो एक plant में convert हो जाता है. वो एक सीड है. जब मूंग होते हैं तो वो एक सीड है. अब उनको पानी दी जाएगा तो वो क्या होगा? एक प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मेक्स इट्स ओन लाइफ. Collect some dry moong seeds, keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest in the water. अब वाटर में डालने हैं. फिर ये क्या है कि जो भी सोक सीड होगा वो क्या होगा? वो उगने लगेंगे. डिवाइड द सोक्ड इनटू द 4 पार्ट्स, कीप वन completely submerged in the water for how many days? 3 to 4 days. Here they have said that 3 to 4 days के लिए आपको पानी में रहने देना होगा. Do not disturb the dry seeds and those submerged in the water. Keep one part of the soaked seed in a sunny room and another in a complete dark region, like a cupboard that does not allow any sunlight to come in. Keep the last part in the very cold surroundings, say in the refrigerator or the ice around them. Resin them and replace the water every day. Do you notice after a few days, do the seeds in all the 5 containers germinated uniformly? Do you find slower or no germination in any of this? So आपको ये करके देखना है कि रेफ्रिजरेटर में मुकना है कई सीड्स को डार्क में कबर्ड में मुकने हैं, कई को सनलाइट में मुकने हैं. तो कौन से किस को सीड्स को जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और किस प्लांट्स किस सीड्स जल्दी से उग जाते हैं, जो सनलाइट में रखे हुए होते और डार्क में रखे हुए होते और रेफ्रिजरेटर में रखे हुए. यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस सीड्स. Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of a plant? In fact, abiotic factors are important for all living organisms. सब कुछ abiotic factors are all important for the किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. बिकॉज विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट लाइट एंड विदाउट हीट it cannot grow and it cannot make its own life. We find that organisms exist in a very cold as well as very hot climate, isn't it? How do you manage to survive? Adaptation is the method by which organism gets well adjusted to the climate. यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर बहुत गर्म होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वो सीड्स ग्रो होंगे
तो नहीं होंगे, बिकॉज इट नीड्स अ रूम टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर बहुत लो होगा तो भी वो नहीं ग्रो कर पाएगा, अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो इट नीड्स अ रूम टेम्परेचर बाय विच द सीड्स कन्वर्ट्स इट्स लाइफ, एंड it can also make its life by growing in a plant. Here they also given that the adaptation is the method by which organism gets well adjusted to the climate, climate के जैसे adjust हो जाएगा। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. The जो भी abiotic components है वो very this change, but कैसे चेंज हो पाएगा, तो वेरी स्लोली। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस change dies and only the adapted one survives. जो भी टेम्परेचर होता है, जो भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, उसके कारण कई सीड्स डाई हो जाएंगे और कई सीड्स सर्वाइव भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफरेंट हैबिटेट। यही यही डिफरेंस फैक्टर, यही एबायोटिक फैक्टर्स जो डिफरेंट वे में होते हैं, लाइक एयर, वाटर एंड लाइट, हीट, this results in a very wide variety of organisms by which they can grow or not grow, that we will know. Let us look at some habitats understood the abiotic factors and the adaptation of animals in this habitat। कैसे उसका adaptation होता है वो हम देखेंगे, और क्या देखेंगे, अब abiotic factors है जो abiotic and some habitats how they understood the abiotic components in this। Now the journey through different habitats, some terrestrial habitats। अब यहाँ पे मैनी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स दी गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।